I will just give in the oral presentations, no PPT. Okay. Okay. Good afternoon all. It's my privilege to present my paper on this international conference and my topic is the challenging and opportunities in education during and post-COVID-19 post-COVID-19. So first we have to know how this COVID-19 has affected the higher education system. अगर हम COVID-19 की बात करेंगे, how this is affecting the higher education system. This COVID-19 pandemic, we know that from the last 2-3 months, it has affected the all education systems. इसमें हमारे education system, school become closer, university, college, all become closer. All are depending on this online platform. So these online teaching are playing a very much important role in this pandemic time. So this COVID-19 pandemic has a negative effects on the education where the students and the school face additional, the school and college are facing the additional challenges. But government also doing the various steps. They are switching on the SWAYAM platform, e-Pathshala and many digital library which are helping the remote children to access the education system. They are using this digital platform. So government are also playing a very much important role to overcome this pandemic effects on the education system. But we can say that अगर हम metro की बात कहेंगे तो within the metro private school they have a good facilities structure, good infrastructure, facilities, internet connection is good. So the receiver, the learner also have a good, they also have a good, this one they can have a good, they have a network connectivity, no problem, they have a Google platform, they are using the WhatsApp, they are using Zoom, all are they using. And this become easy for them to access the education. But when we see in the remote area, अगर हम remote education की बात करेंगे जहाँ पे network connections problem बहुत important है, they are facing the challenges more. They cannot do the online classes because of this network connectivity. या तो poor connections हो जाता है या तो network connectivity problems हो जाती है. तो इससे क्या हो रहा है? These are affecting mainly the remote areas. So this is the big challenges we are facing on this COVID pandemic. But as a school, teachers, government, we all are doing our best. हम सब अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं ताकि इससे एजुकेशन सिस्टम इफेक्ट ना हो. This pandemic has also affected the education system. Like we can say quite 370 million children and youths are not going in the school nowadays. बहुत सारे बच्चे लोग they are remaining in the home. They also become affected. They become उनको बहुत ही जरूरी है कि they are important for the online platform education. इसी से हम connected रह सकते. We become connected with the student with this online platform. So now what is the opportunities we are facing with this COVID-19 online education? See, अगर इससे हम बात करेंगे तो पहले तो quality in teaching learning also become curated. Teacher collaboration with the student also become more. Interactions भी ज़्यादा हो गया student के साथ. And these are playing a very much important role in this pandemic situation. जहाँ पे स्टूडेंट्स लोग टीचर के साथ कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे, ये ऑनलाइन एजुकेशन ही है. दोज हु आर प्लेइंग ए वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल टू कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो पहले हम फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिशनल लर्निंग मेथड. फेस टू फेस लर्निंग मेथड इज इंपॉर्टेंट नाउ. बट आफ्टर दिस पैंडेमिक सिचुएशंस वी आर कमिंग टू द ब्लेंडेड लर्निंग which is very much important. अभी हम importance देंगे तो blended learning को, जिसमें आप traditional method भी use कर सकेंगे. Then we can mix the traditional and the digital learning. This will be more effective to the education system. So now blended learning is giving more importance. अभी हम blended learning को बहुत importance दे रहे हैं जहाँ पे traditional teaching methods भी हो और digital teaching भी हो. तो अगर हम कुछ challenges की बातें करेंगे, if it's talking about the challenges in the pandemic situation, the distance learning become more. Distance learning बहुत ही ज़्यादा हो गया. It's become more and nowadays educator become overall. Now they all the college, university, they are performing the conferences, workshop, seminar to connect with the students, to connect with the teachers, educators. This is a platform. अगर ये जो conference हम जो करा रहे हैं, this is a connection between the educators and the student and to share our ideas on this pandemic situation. जो बहुत ही important है इस समय कि हम इस situations में भी हम एक दूसरे से connect कर पा रहे हैं. और जैसे हम दिल्ली के हैं तो आप लोग we can connect it with all parts of the nation. पहले तो हम सिर्फ एक कॉलेज में ही करते थे, पर because of this online teaching, online platform, we are connecting with all nations, educators, students. This is a very good platform we can say. These are affecting the positive effects on the education system also we can say. And the variety of the students are quick. See, there are some students and educators, they are very quickly they are adapting the technique.
बट अभी भी कुछ ऐसे टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स, एजुकेटर्स, दे आर फेसिंग challenges to adapt this technology. तो बट स्लोली एज अ सिचुएशन की डिमांड ये ऐसी है कि दे हैव टू अडॉप्ट दिस टेक्निक. तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि कोविड-19 हैज अफेक्टेड आवर एजुकेशन सिस्टम. दे बिकम चेंज. अभी हम फेस टू फेस लर्निंग, ट्रेडिशनल लर्निंग, फिर डिजिटल लर्निंग में आ गए. वी आर यूजिंग द ब्लेंडेड लर्निंग. एंड अगर ये सब काम हम तभी पूरा कर सकते हैं व्हेन द स्टूडेंट्स, फैकल्टीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, टीचर्स ऑल आर कनेक्टिंग टुगेदर. एक ही सभी सब एक प्लेटफॉर्म में आके डिस्कस करके वी कैन शेयर एंड वी कैन सॉल्व द दिस प्रॉब्लम. तो इंडिया, तो इसके लिए हमें कुछ सुधार करने होंगे. वी हैव टू इम्प्रोवाइज सम एजुकेशन सिस्टम. इंडिया टीचिंग शुड बी डिजाइन, इट शुड बी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कुछ इनोवेटिव होना चाहिए. दिस इज अ चांस टू रिवर्क द अपर एजुकेशन सिस्टम. यूनिवर्सिटी को अभी दे रिमॉडल इटसेल्फ. करिकुलम में डिजाइनिंग में चेंजेस लाने चाहिए. कोलैबोरेशन, स्किल डेवलपमेंट, स्कूल इन्वॉल्वमेंट और शुड टारगेट द इंटरनेशनल एजुकेशन. अभी हम सिर्फ नेशनल एजुकेशन की बात नहीं करेंगे. व्हेन वी टॉकिंग अबाउट दिस ऑनलाइन एजुकेशन, दिस इज कनेक्टेड टू इंटरनेशनल. हम सभी इंटरनेशनल, इसमें इंटरनेशनल एजुकेटर्स स्टूडेंट्स आर आल्सो कनेक्टिंग विद दिस. So it is very much important to redesign the structure of the education system. So the feedback, when we are saying about the feedback of the online education, this is a mixed. क्योंकि अगर हम कहेंगे कि मेट्रो में या गुड जहाँ पे कनेक्टिविटी प्रॉब्लम नहीं है, दे आर इजीली दे आर रिसीविंग ऑल दिस. बट इन द रिमोट एरिया नाउ ऑल्सो दे फेसिंग द प्रॉब्लम. दे डोंट हैव, दे हैव नेटवर्क प्रॉब्लम. उनकी मैं हर कॉन्फ्रेंस में सुनती है उनके नेट खत्म हो रहा है. दिस इज अ वेरी बिग इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑल द स्टूडेंट्स, टीचर्स, एजुकेटर्स आर फेसिंग द प्रॉब्लम. बट we have to overcome. And so school, college, university को कुछ redesign करनी चाहिए अपनी curriculum structures में, so that all the students, teacher, educator, they can come to the online platform and they can share their ideas, thoughts, ताकि हम इस pandemic situations में अपने आप को सबके साथ connected रख सकें. And thanks for giving me opportunity to present my paper on this big platform of the international conference. Thank you. धन्यवाद.